Standard 10 Maths Lecture 8 Unit 2. Hello students, today we will understand question number 4 of exercise 2.3. Here we are given that when x cube minus 3x square plus x plus 2 is divided by g of x, we get quotient x minus 2 and remainder minus 2x plus 4. Then we are asked to find out gx. So here in this question, you are given the polynomials in this way. The dividend, divisor, you are asked to find out quotient and remainder. So here we have to first of all remember the division formula, that px is equal to gx into qx plus rx. It means dividend equals to divisor into quotient plus remainder. So here whatever values we are given, we'll put here in this formula. So I have written the values of the given polynomials here in this formula, and now I brought these two terms minus 2x and 4 at the left hand side. So I got this situation, this condition: x cube minus 3x square plus x plus 2 minus 2x minus 4 is equals to gx into x minus 2. Now by making sum of x and 2x, I got 3x and plus 2 and minus 4, so I got subtraction minus 2. Now to find out gx, I have to brought x minus 2, which is in multiplication with gx. I have to brought that term in left hand side. So x minus 2 is in multiplication with gx, so when I will bring it at left hand side, it will come in division. So this will happen. And now to find out value of gx, I have to get the division. I have to do the division procedure. So when we divide the given polynomial x cube minus 3x square plus 3x minus 2 with x minus 2, the quotient we get that it is x square minus x plus 1, और जो quotient मिला वही है gx का value. Now let us see question number 5. Give examples of the polynomials showing below relations. तो first relation हमें दिया है degree of px equals to degree of qx. तो सबसे पहले आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है कि पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स. तो यहाँ पर आपको पी एक्स और क्यू एक्स का डिग्री इक्वल रखना है. अब जब पी एक्स और क्यू एक्स का डिग्री अगर इक्वल होता है तो जी एक्स जो है वो कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है. तो करना क्या है हमें, पहले सबसे पहले हम क्यू एक्स के लिए कोई एक पोलिनोमियल एज्यूम कर लेते हैं. तो मैंने क्यू एक्स के प्लेस पर ये एक पोलिनोमियल एज्यूम कर ली. अब जी एक्स के लिए मुझे कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ले लेना है. तो मैं एक नंबर लेता हूँ जी एक्स इक्वल टू 4. तो करना क्या है, और आर एक्स के प्लेस पर मुझे कोई भी एक पोलिनोमियल लिखनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं कोई भी नंबर कांस्टेंट नंबर या फिर 0 लिख सकता हूँ. तो मैंने आर एक्स इक्वल टू 0 लिख दिया. अभी मैं ये सारी वैल्यू ऊपर के फॉर्मूला में इनपुट कर दूंगा. तो पी ऑफ इक्वल्स टू जी एक्स मतलब 4 इंटू क्यू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और आर एक्स इक्वल्स टू 0 मिलेगा. तो पी एक्स मुझे मिला 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12. तो अभी मुझे ये वैल्यू रख देनी है. तो ये हुआ हमारा आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ आर एक्स रखना है. तो जो बोला है ना वो पोलिनोमियल्स हमें सबसे पहले ले लेनी है. यहाँ पर क्यू एक्स और आर एक्स दोनों. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने क्यू एक्स के लिए एक पोलिनोमियल लिया है x प्लस 2 जिसका डिग्री है 1. x का पावर 1 है तो डिग्री 1 हुआ. दूसरा पोलिनोमियल है आर एक्स, रिमाइंडर का जो लेना है वो लिया है मैंने x प्लस 3, तो जिसका भी पावर या डिग्री है 1. तो क्यू एक्स आर एक्स का डिग्री सिमिलर हुआ. अभी जी एक्स के लिए मुझे कोई भी एक पोलिनोमियल लेना है. कोई भी पोलिनोमियल लेना है. मैंने यहाँ पर ले लिया है x स्क्वायर प्लस 1. आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है. अभी हम ये तीनों वैल्यू को जो फॉर्मूला है हमारा डिवीज़न प्रोसीजर का उसके अंदर मैं इनपुट करूँगा. तो कुछ इस तरह से मुझे वैल्यू मिलेगा. अभी मुझे करना क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन है वो मुझे कंप्लीट कर देना है, और आंसर जो आएगा उसमें x प्लस 3 का वैल्यू प्लस कर देना है. तो सिंप्लीफिकेशन करने से हमें पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये मिलेगी. तो हमें ये वैल्यू लिख देनी है. तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से बनेगा. पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला ये बनेगा, क्यू ऑफ एक्स का और आर एक्स का और जी एक्स का. अभी डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू 0 लेना है. तो क्या करूँगा, तो क्वेश्चन जो हमारा आंसर 1 है जो वही आप देख लो, ठीक है.
उसमें हमने आर एक्स 0 ही लिया है तो वही लिख देते हैं, तो वही यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो ये गिवन कंडीशंस की पोलिनोमियल्स लिखने का जो क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1, उसमें 2 सम्स, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सम्स दिए, उसमें से फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। पी ऑफ एक्स आपको एक पोलिनोमियल दिया है और एक्स की कुछ वैल्यूज़ दी है, तो वो वैल्यूज़ जो है वो पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ है कि नहीं वो हमें फाइंड करना है सबसे पहले। तो फॉर एक्स इक्वल्स टू 1/2 we'll put value of x in the polynomial. So at the place of x we will put 1/2. Making the cube of 1/2 we will get 1/8. Making the square we will get 1/4. So I have made mistake in making the sign of second term x square. So it is plus in the question. I wrote minus. Now I have corrected it. And now by simplifying the values, so in this situation, the denominators of all the term is 4 and 2. So LCM of 4 and 2 is 4. So by doing the calculation of LCM, I have got this term, and the final value I got is 0. So this way I proved that 1/2 is 0 of P of x. Here you are asked to find out the same thing about 2 more values, and they are 1 and -2. And for 1 and -2 you will find the same thing yourself. And by finding that, by solving that, you will find that these values are also zeros of P of x. Now the next thing you have to find out is that relation of zeros and the coefficients. Now let's take these values as they are zeros of the P of x. We'll say them alpha, beta and gamma. So alpha is equal to 1/2, beta equals to 1 and gamma equals to -2. Now first of all we will find sum of zeros, and we'll put these values as alpha plus beta plus gamma, 1/2 plus 1 plus -2. Now taking 2 as a LCM and solving the question by simplifying the terms, I will get 1 plus 2 minus 4/2. And the value of sum of zeros is -1/2. When you see the P of x, you will see that the answer of sum of zeros is -1/2, and the numerator of this answer 1 is the coefficient of x square, and that is b, and the denominator of the answer 1/2, that is 2, and that is the coefficient of x cube, a equals to 2. So we'll write the same thing in this way, that the sum of zeros is equals to minus coefficient of x square upon coefficient of x cube. Now the second thing about zeros for a cubic polynomial, that is sum of product of two zeros. So alpha into beta plus beta into alpha and alpha into gamma. Product of two zeros, it means alpha beta, beta gamma, gamma alpha, and sum of these products. So by putting the values we will get this format. By simplifying this term we will get 1 minus 4 minus 2/2, and the answer will be -5/2. So now comparing this numerator and denominator with the coefficient of the polynomial, when we compare these values we see that the numerator of the answer is the coefficient of x, and the denominator is the coefficient of x cube, and that is c and a. So we will write c upon a. So the relation we got is that sum of product of two zeros is equals to the ratio of coefficient of x and coefficient of x cube. Now let's find the product of all of these zeros, and that we got is -2/2. And when we compare these values, the numerator and denominator with the coefficient of the polynomial, we see that if we keep minus apart, अगर माइनस को हम अलग रखते तो हमें मिलता है 2/2, जिसमें से जो न्यूमरेटर का 2 है वो d है कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर का 2 है वो x क्यूब का कोएफिशिएंट है, और हम उसे प्रेजेंट करेंगे -d/a के फॉर्म में।
तो हमें क्या मिला रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोज इज इक्वल्स टू द माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. We will do the same thing for the sum number 2 of question number 1. Now in answer number 2 you are given sum of three zeros, then sum of product of two zeros and product of all the three zeros for a cubic polynomial, and you are asked to find out the cubic polynomial which have these things. And the cubic polynomial which has sum of zeros alpha plus beta plus gamma, sum of product of two zeros is alpha into beta plus beta into gamma plus alpha into gamma, and product of all the three zeros is alpha into beta into gamma, has this formula. Now we will put values of these things. क्यूबिक पोलिनोमियल के जिसके जीरोस का सम, दो जीरो के मल्टीप्लिकेशन का सम और तीन जीरो का मल्टीप्लिकेशन दिया होता है, उसका फॉर्मूला इस तरह से बनता है. तो इसमें हम वैल्यूज इनपुट कर देंगे. सो आंसर वी गॉट इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14. Now in answer number 4, question number 4, you are given two zeros of a polynomial and other zeros you are asked to find out. So as we have learned this method before, value of zeros is always called value of x. So I will write x equals to 2 plus or minus root 3. So x minus 2 equals to plus or minus root 3. Now I will make square at both of the side. So square of x minus 2 and square of plus or minus root 3. Square of root 3 is 3. When we bring 3 at the left hand side, we will get this polynomial x square minus 4x plus 1. So we say x square minus 4x plus 1 is a factor of p of x, and now we will divide p of x with this factor and we will get the another factor, and by getting factors of the another factor we will get zeros, another zeros. So by dividing p of x with the factor of its factors x square minus 4x plus 1, p x को हमने x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड किया तो हमको दूसरा फैक्टर मिला x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, जिसके फैक्टर्स आपको मिलेंगे x माइनस 7 एंड x प्लस 5. एंड सो राइटिंग 0 equal to these factors, we will get other zeros of the polynomial are x equals to 7 and x equals to minus 5. So in this way we will solve this question. Now two questions remained, I will explain in next lecture.